में आफ्सपा जो है हम उसको न्यूज़ में सुनते हैं, तो उसका कितना रिलेवेंस है आज की डेट में या पहले? आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट जो है, इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी जब आप ऑन द कंट्री की कॉल पे या एबनॉर्मल एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन क्रिएट होती है सिक्योरिटी की कहीं पे भी, तो आप वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी फोर्सेस को बुलाती है ऑपरेट करने के लिए कि यहाँ पे इंसर्जेंसी है या मिलिटेंसी है और लॉन्ग टर्म में है और इसको सीरियसली डील करना पड़ेगा। तो आप जब फोर्सेस को वहाँ बुलाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट फोर्सेस जब जाती हैं काम करने, तो दे नीड सम लीगल प्रोटेक्शन to operate in that area, because once you operate in that area you have to conduct operations, and there will be a loss of life, there can be a damage, there can be anything. So until unless you give them legal protection to manpower forces working there, they will not be able to perform their duties. Everybody FIR will be lodged against them. Somebody is killed in firing unknowingly, then murder charges will be against you. So you need some legal cover, legal protection. So that's why Armed Forces Special Power Act came into existence, where you have certain powers are given, where state police cannot prosecute you until central government gives you sanction, and so many other protections are there. Now once AFSPA is in place, you can very confidently men can work. Because in the middle of the night, if you are undertaking operation, in that process, due to your firing, some collateral damage happens due to some fire, some civilian who's passing by killed, or even some you thought you are killing a militant and that happened to be an innocent man, then your intention was not to kill that innocent man, but in process of doing your government duty, you killed somebody. You are not blameworthy, so that protection should be there. Armed Forces Special Power Act is a very, very important tool in the hand of Government of India, because once that tool is implemented, your forces can work without any fear and their interests are protected. And sometime local population, local government say that we misuse the Armed Forces Special Power Act. Okay, up to some extent it may be correct. But any force coming from outside cannot work to quell the militancy or terrorism until you empower them in terms of legal protection, legal cover. So that's why AFSPA is a very, very important thing. Okay. चलते हैं लास्ट लेग में बंगाल बॉर्डर की तरफ, जिसमें आपने मल्टीपल टेन्योर्स किए हैं बंगाल में, और आपने लार्जेस्ट बीएसएफ का फ्रंटियर भी कमांड किया है आईजी। तो अगर मैं मैक्रोस्कोपिकली बात करूं तो बंगाल बॉर्डर, क्योंकि हम न्यूज़ में पढ़ते हैं, काफ़ी चैलेंजिंग है। अभी पार्लियामेंट में भी इसका डिस्कशन हुआ था कि जो सबसे ज़्यादा लोग बीएसएफ से छोड़ के जा रहे हैं वो अपनी 20 ईयर्स की सर्विस के बाद छोड़ के जा रहे हैं, बहुत अर्ली एज में रिज़ाइन कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ स्ट्रेस लगता है दूर से कि स्ट्रेस है कुछ, और पर्टिकुलरली बंगाल बॉर्डर से बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं। तो बंगाल बॉर्डर पे ऐसा क्या है जो एक तो स्ट्रेस हो रहा है, दूसरा बंगाल बॉर्डर पे बीएसएफ का काम क्या है? बंगाल बॉर्डर इज जस्ट लाइक एनी अदर इंटरनेशनल बॉर्डर जो बीएसएफ मैन कर रही है। पहले तो जिस इधर पाकिस्तान है उधर बांग्लादेश। फ़र्क इतना है, बेसिक फ़र्क जो शुरुआत का है, कि बंगाल बॉर्डर में पॉपुलेशन ऑल अलोंग द इंटरनेशनल बॉर्डर बहुत क्लोज है। राइट अप टू जीरो लाइन there may be a village or population, which is differentiate between western border and eastern border. जम्मू में, पंजाब में, राजस्थान में, गुजरात में आपको बॉर्डर पे एकदम घर नहीं मिलेगा, गांव नहीं मिलेगा। विलेज में भी 500 मीटर, 700 मीटर, 1 किलोमीटर इनसाइड from the IB. Here the more you go to border area, the more population density increases. Number one. Number two, the bulk of the border is riverine border. नदियाँ हैं, ponds हैं, water bodies हैं, नाले हैं, और चूँकि बंगाल में बारिश बहुत होती है तो ये नाले 12 महीने इनमें पानी रहता है। तो that becomes another difficulty to man the border. पॉपुलेशन हो गई,
बॉर्डर फेंस सबसे लास्ट में शुरू हुई है बंगाल के अंदर। पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे पंजाब शुरू हुआ, राजस्थान शुरू हुआ, गुजरात आया क्योंकि पंजाब मिलिटेंसी थी, फिर जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी आ गई। नॉर्थ ईस्ट की तरफ ध्यान ही नहीं दे गया किसी का। एंड पाकिस्तान ISI ने बहुत स्मार्टली नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर को, बंगाल बॉर्डर को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया नेपाल के बॉर्डर के साथ साथ। उन्होंने अपने ISI के सेंटर्स, मॉड्यूल्स खुल गए ढाका में, तो लॉट ऑफ मिलिटेंट वॉज ब्रॉट बाय पाकिस्तान टू ढाका एंड दे वर पुश्ड इनसाइड इंडिया थ्रू बंगाल बॉर्डर। बंगाल बॉर्डर वॉज ऑलवेज मैनेज वेरी लाइटली and it has got inherent problem of population, smuggling, porousness, crime, and then poor population. A lot of poverty is there on border, in Bengal border. So people indulge in smuggling, which they don't consider smuggling. So, and since Bangladesh is a very poor country, it was having a poor economy, now it has come up very well. That up to 50, 60, 70 kilometers inside the Bangladesh, entire supply was from India in terms of essential commodity like sugar, chawal, anything. You name it, it used to go, medicine. So slowly, Government of India started realizing that now Bengal border has to be taken care of. And the political dispensation in Indian Bangladesh, West Bengal, was always non-central supportive, and the state administration never gave importance to Bengal border security. They never accepted the fact that Bengal border is critical for smuggling as well as national security. So once you come to Bengal border, every day Jawan has to face the problem of smuggling. 24 hours he has to be on his toes. That Bengal border can be exploited for smuggling. Smuggling of petty goods, important thing, major thing, minor thing. Now Jawan doesn't have a time to rest in Bengal border. In night, smuggling effort, during day smuggling effort. Then when you take drastic measure, you get involved in controversy because a lot of false allegations, smuggling allegation, then allurement by smugglers to BSF men for involved in smuggling, monetary allurement or any kind of allurement can be there. So chefs working, coming from Kashmir or Rajasthan or Punjab or Gujarat or even for that matter Northeast, Manipur, Mizoram, coming to Bengal border and manning the Bengal border in a given situation is most tough duty for border security force, personal right from officer to Jawan. And I can say with conviction after putting in 37 years of service that I have served in all border security force. I found Bengal border most difficult border in terms of, not in terms of management of the border, in terms of morale, motivation, stress level for the men. Men are very happy serving at 16,000, 15,000 feet height of Kashmir in the snow, or in the desert of 50-degree temperature in Rajasthan, but not in Bengal. You can you can be blamed for smuggling, you can be blamed for connivance, for corruption, and you don't have a time to rest and relief. Men are 24 hours on duty, 6-hour duty, 6 to 12 they go for duty at the border in the night, 12 o'clock in the night they come back, deposit their weapon, change, have their food, sleep by 2 o'clock, again 5 o'clock they are up, again they are doing for various miscellaneous duties, again some of them are going to OP duty, some of them for maintenance, some of them for purchasing, some of them some other job, again 6 to 12 one chap is going for OP duty, and this chap who came at 12 o'clock in the night do some job, अपने कपड़े धोने हैं, नहाना भी है, सो सकता नहीं आराम से, BOP के अंदर हल्ला गुल्ला मचा रहता है, लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं, फिर उसको 12 बजे फिर ड्यूटी पे जाना है, थक गया है, मेंटली फटीग है, पैसा मिलता नहीं. बंगाल बॉर्डर इज नॉट कंसिडर्ड हार्ड एरिया, इट इज कंसिडर्ड वेरी नॉर्मल एरिया, नो एक्स्ट्रा मॉनेटरी बेनिफिट, it is considered normal posting, soft posting. So Bengal border has got a
is a good recipe for border security force personnel to get tired, to demotivated, physically tired, and our force, if you ask Jawan that where would you like to serve, 90% will say we send us to anywhere except Bengal border. One complaint against you, it may be false or true. Court of inquiry will happen. It will take its own time. Jawan is under stress. What will happen to me? 10, 15 criminals will write a letter against you. They are involved in this. Ultimately, the complaint will come. You have to conduct an inquiry. Local police is totally uncooperative. Can you imagine they can lodge a FIR against a commandant for sending a patrol in the border area? Then you cannot fire. Non-lethal strategy is a word which you may not have heard, where a weapon is fired not to kill but to injure. Not that strategy has been adopted by BSF in Bengal border on the request of Bangladesh government. They don't kill our people, arrest them. Now you fire non-lethal weapon, even if somebody is killed, then you ask your commandant why you are killing people. Diplomatic pressure, political pressure. So in overall, Bengal border is a very, very tiring border, a stressful border, and when you don't get support from local administration, whether it's a civil administration or a police administration, then it really it becomes pretty difficult for a border security force to work in isolation. Cattle smuggling is the biggest problem in Bengal border. Now cattle of all the India are reaching Bengal. Now ultimately nobody takes responsibility for movement of the cattle right from Rajasthan or Punjab or UP. But once it land on the just bang on the border, BSF becomes the responsible. आप स्मगलिंग क्यों नहीं रोकते? कैटल कैसे स्मगलिंग हो रहा है? कैटल कैसे बॉर्डर पे क्रॉस हो रहा है? आप पैसे खा रहे हैं, आप क्रिमिनल हैं, आप स्मगलिंग करवा रहे हैं. बट किसी ने पूछा ये कैटल बंगाल का, ये हरियाणा का कैटल, राजस्थान का कैटल यहाँ पहुँचा कैसे? तो साहब, यू कैन नॉट स्टॉप द मूवमेंट ऑफ द कैटल बिकॉज सुप्रीम कोर्ट से सच और लोगों के राइट्स हैं अपने कैटल को बेचने के. मैकेनाइज खेती हो गई है नॉर्दर्न इंडिया में, सरप्लस हो गया है कैटल. बांग्लादेश जाना है, बांग्लादेश में फैक्ट्री है जो कैटल के मीट को एक्सपोर्ट करती है. बांग्लादेश में फैक्ट्री है जो कैटल की बोन्स के क्रॉकरी बनाती है. बांग्लादेश में फैक्ट्री है जो कैटल के लेदर से शू बनाती है. उसको कैटल मिलता है. बट इतने बड़े बॉर्डर पर जब हजारों कैटल पहुंच जाएगा, लाखों कैटल पहुंच जाएगा, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इज नॉट द ओनली एजेंसी विच कैन स्टॉप द मूवमेंट. नाउ a villager can bring the cattle from cattle hut twice a week. Now you knock his door and said ये कैटल आप 4 लेके क्यों आए हैं? मतलब ये रसीद है, हम हाट से लेके आए हैं. फिर आप बोलेंगे साहब देखना हम फिर आएंगे कल आप गए, कैटल कहाँ है आपका? साहब वो तो हमने बेच दिया, यहाँ भेज दिया, तो कैटल स्मगल हो गया. इट्स ए अनएंडिंग साइकिल. And ultimately, who bear the brunt? BSF. So BSF, that's why Bengal border is a very difficult border. I was IG North Bengal Frontier manning the long border, and it was almost 18 battalions were under my command, and it was 1,000 something kilometer border. It's a very difficult border, and still there are large gaps in fencing. Because land is not acquired. Once you purchase the land, then only you can erect the fencing. Then bridges are missing. Then rivers are there. So it's a difficult border. And I can say that Jawan are fearful to serve in Bengal border. And if they complete their 20 years, they used to put up their papers and go back. Because they were fearful. अगर हमारे खिलाफ इंक्वायरी हो गई, हमारे खिलाफ कंप्लेंट हो गई, तो I may get dismissed. और आई मे गेट सस्पेंडेड. तो मेरा क्या होगा? मेरे बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, मेरा घर में माँ बाप हैं, तो भाई 20 साल नौकरी हो गई, सब बंगाल में नौकरी नहीं करूँगा. इवन बंगाली ऑफिसर्स डोंट वांट टू सर्व इन बंगाल बिकॉज दे आर द फर्स्ट टारगेट. लोग उनको बोलते हैं साहब तो बंगाली है, ये तो बंगालों को मिल जाएगा कि स्मगलिंग करवा देगा. तो हर इंसान परेशान है बंगाल के अंदर, एंड ऊपर से उसको कोई मॉनेटरी बेनिफिट भी बंगाल में आने का नहीं मिलता है. तो दिस इज द प्रॉब्लम.